today again we are going to talk about the very important chapter of our syllabus, that is the molecular basis of inheritance. Now children, let us talk about the structure of nucleotides. So this is the structure of nucleotide. And children, whether it is RNA or DNA, I mean there are differences in the structure, but the concept of a structure remains same. So we are talking about the structure of nucleotide, and mainly such nucleotides join together to form a polynucleotide chain, right? So first we will just understand the structure of monomer unit. And what is the monomer unit? Yes, exactly, it is a nucleotide. So we are going to talk about the monomeric unit, and the monomeric unit is the nucleotide. Now, any nucleotide has three important components. What are those three important components? The three important components of any nucleotide is pentose sugar, nitrogenous bases, and phosphate group. So these three are important components of nucleotide. Now children, here in this picture, it is this is shown. This is a phosphate group, right? Then you have a pentose sugar. This is the pentose sugar. So this is the entire structure which you see here. That entire structure is the pentose sugar, which is denoted as S. Children, pentose sugar, pent word यहाँ आता है, means 5 pentagon structure. So that pentagon structure form, that is why it is called as pentose sugar, right? And it also consists of nitrogenous bases. So these three are very important component of any nucleotide. Children, when we talk about the nitrogenous bases means a base which contains nitrogen. So that is the nitrogen containing bases. Children, I am sure by now all of you are aware that what is a base and what is an acid. We have studied all of these things in our basic chemistry of class 10th, right? So now what we have to understand in each of these components in detail: what is pentose sugar, how is that structure, what happens when these three compounds join together. So first let us talk about the pentose sugar. So we will start our discussion with the pentose sugar. Children, sugar is anyways a saccharide, right? So pentose sugar is a monosaccharide with 5 carbon atoms. That is why it is named pentose, as I said. And two types of pentose sugar are there. In case of RNA, it is ribose sugar, and in case of DNA, it is deoxyribose, right? So it is a major difference between the structure of DNA and the RNA, right? In case of DNA, the sugar is deoxyribose sugar, and in case of RNA, it is ribose sugar, right? So this is the difference between the structure of DNA and RNA, right? So what I just mentioned that in RNA you have ribose sugar, and in DNA you have deoxyribose sugar. Now you might be wondering that what is the difference between ribose and deoxyribose sugar, right? अब दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर में डिफरेंस क्या है, राइट? सो लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर. सो इफ यू कंपेयर बोथ द स्ट्रक्चर्स, राइट, अगर आप दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हो, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ बोथ द शुगर्स. ओके, so these are the structure of ribose sugar and deoxyribose sugar. So let us see like the difference which you see here in these two sugars, right? Actually we are comparing both the sugars, and the difference which you see here is OH group, right? So in deoxyribose sugar you actually see that the OH group is being replaced by H group. So this OH group is replaced by H group in deoxyribose sugar,
जो डीएनए में जो पेंटोज शुगर होती है उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, and that is why it is called deoxyribose sugar, because hydroxyl group is removed, so that is why it is deoxy, right? So that is how you remembered, like children, D, so anything where D is there, जहाँ पे भी D word आ जाता है, जैसे कि for example decoloration, so decoloration is what, it is the removal of color. So similarly deoxy, that means the removal of hydroxyl group, right? तो कहीं भी अगर D word आता है तो वो क्या होता है, removal. तो deoxyribose means it is the removal of hydroxyl group, right? So that is how you can say that here deoxyribose you have one hydroxyl group here, and ribose you have two hydroxyl group here, right? तो डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और राइबोज में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए. डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, और आरएनए में राइबोज शुगर होती है जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं. ओके, नाउ इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड, how will you understand whether it will form RNA or DNA? Yes, answer is by looking at the structure of pentose sugar you can get that what is it is RNA or DNA. So if the pentose sugar is ribose it will form RNA, and if the pentose sugar is deoxyribose it form DNA, correct? So now let us talk about द फॉस्फेट ग्रुप, राइट? अभी हमने बात करी पेंटोज शुगर की, अब हम बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप की, राइट? सो व्हाट इज फॉस्फेट ग्रुप? सो हियर यू कैन एक्चुअली सी द डीऑक्सीराइबोज इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम राइबोज शुगर. जो डीऑक्सीराइबोज है वो एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम राइबोज शुगर, राइट? बिकॉज इफ यू सी द स्ट्रक्चर इट इज एग्जैक्टली द सेम, ओनली OH इज रिमूव्ड, राइट? तो OH is replaced by hydrogen, that is why we can say that deoxyribose is also derived from ribose sugar. अच्छा, हम बात कर रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप की. फॉस्फेट ग्रुप क्या है? It is nothing but the inorganic salt of phosphorus. So you all know what is phosphorus. Children, talking about it, it forms the backbone of polynucleotide chain along with the sugar. So this pentose sugar and the phosphate group, they together form the backbone of polynucleotide chain. Yes, the phosphate group and the sugar, they together form the backbone of polynucleotide chain, whether you talked about DNA or RNA. So backbone actually formed by phosphate group. So when we talk about phosphate, how do we write phosphate? We can write phosphate as PO4 minus 4. Right? Now children, normally we write phosphate as this. So let us look at the third important component. Now the third important component is nitrogenous bases. So children, it is nitrogen containing compound with properties of a base. So obviously it is a base but nitrogenous bases, right? Because it contains nitrogen. Children, talking about the nitrogenous bases, so there are two important categories of nitrogenous bases. The two important type of nitrogenous bases, they are purine and pyrimidine. So these are two important types of nitrogenous bases. So these are two type of nitrogenous bases, and let us see what is purine and what is pyrimidine. So first we will talk about purines. तो सबसे पहले हम purines के बारे में बात करते हैं. Purines क्या होते हैं? Purines are heterocyclic aromatic organic compounds. So two big term, right? So we understand by the term
but however I am sure you studied all these things in your organic chemistry. But still, just to keep things clear at this point, we will see. So first we will see that what is heterocyclic. बच्चों heterocyclic क्या होता है? यहाँ पे देखो आता है हेट्रो. हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट. cyclic any cycling compound, right, which starts from one point and ends at the same point. यही तो होता है cyclic. तो heterocyclic का मतलब क्या हुआ? heterocyclic basically means a cyclic compound with at least two different elements. hetero का मतलब different, अलग अलग. cyclic मतलब cyclic compound. तो एक ऐसा cyclic compound with at least two different elements, that is known as heterocyclic compound. So when you have atoms from two different elements, you can say it is heterocyclic. However you say it is heterocyclic, like just by the structure, so you see that you have nitrogen and carbon in those bases. अगर आप इनको ध्यान से देखो, ये देखो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसमें नाइट्रोजन और कार्बन दो तरीके के एलिमेंट आए, तो इसलिए ये वाले बेस कौन से हुए? हेटेरोसाइक्लिक बेसिस, राइट. और अगर आप इनकी शेप देखते हो, इफ़ यू लुक एट द शेप ऑफ द कंपाउंड, हाउ इट इज साइक्लिक, राइट. सो समवॉट सर्कल, राइट. सो वेयर एवर स्टार्ट कम्स एंड बैक्स and end there, right, correct. And the same time it has multiple elements like nitrogen, it also have carbon, so that is why it is heterocyclic. Okay, समझ में आ गया heterocyclic. The another term is aromatic. Aromatic means hydrocarbon which alternating with double bond and single bond. एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो. like if you have the structure like this, so here you have double bond, then single bond, then double bond, then single bond, then double bond. so ये किस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया? it is aromatic, right. so aromatic means alternative या alternate double and single bond. so purine जो है, अगर हम बात करते हैं तो प्यूरिन इज़ द 9 मेंबर्ड रिंग. जो प्यूरिन होती है, प्यूरिन में 9 मेंबर्ड रिंग होते हैं, 9 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. सो इट इज़ 9 मेंबर्ड रिंग, राइट. और प्यूरिन कौन कौन से हुए? एडेनाइन एंड ग्वानाइन आर द प्यूरिन, राइट. नाउ चलो एक आपको इसके एग्जाम्पल्स के साथ बताते हैं. ये यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ये स्ट्रक्चर. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन. हियर इट इज़ 9 मेंबर्ड रिंग, राइट. कैसे? दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो इट इज़ 9 मेंबर्ड रिंग. और ये जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर है, देख रहे हो, इसमें एक ये रिंग और एक ये रिंग, 2 रिंग प्रेजेंट है, तो ये डबल रिंग्ड हो गया, राइट. एंड इन इट इज़ 4 नाइट्रोजन एंड 5 कार्बन, तो इसलिए हेटेरोसाइक्लिक है. सो प्यूरिन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द pyrimidine बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर. जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है वो प्यूरिन, और जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है वो pyrimidine, राइट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द pyrimidine. चिल्ड्रन, अगेन pyrimidine के बारे में अगर हम बात करते हैं तो pyrimidine जो होते हैं, pyrimidine भी हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं. pyrimidine भी हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. दे आर ऑल्सो डबल एंड सिंगल बॉन्ड, एंड दे विल ऑल्सो हैव डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट. सो दैट इज़ वाई दे आर हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. और pyrimidine कौन से होते हैं? साइटोसाइन, एंथाइमाइन एंड यूरेसिल. सो दीज 3 आर द pyrimidine. एंड हियर यू सी दैट दे डू नॉट हैव डबल रिंग स्ट्रक्चर, राइट. जैसे थाइमीन है ये, तो आप इसमें देख रहे हो ये एक ही रिंग है, तो ये क्या हो गया? pyrimidine. एंड इट इज़ 6 मेंबर्ड रिंग. 6 मेंबर्ड रिंग कैसे होता है? 6 मेंबर्ड रिंग, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर्ड रिंग होती है ये. pyrimidine 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं. सो हाउ मैनी नाइट्रोजन एंड कार्बन्स वी हैव? इन दिस केस वी हैव 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन्स. and now depending upon the structure of DNA and RNA, this nitrogen bases change. like talking about the example, right. examples की हम बात करते हैं. so in uracil is the example of nitrogen base which is only present in the RNA.
तो यूरेसिल की अगर हम बात करते हैं, तो अगर यूरेसिल की हम लोग बात करते हैं, सो यूरेसिल इज़ ओनली प्रेजेंट इन द केस ऑफ RNA, एंड चिल्ड्रन दिस यूरेसिल is replaced by thymine in case of DNA. So again, this is the difference between the structure of DNA and RNA, that in RNA uracil is there and in DNA thymine is there. So this is the basic difference between the DNA and RNA. So this is about the structure of nucleotide, and so many nucleotides join together and form the polynucleotide chain as just shown in the figure. This is the 1 nucleotide, this is 2 nucleotide, this is 3 nucleotide, this is 4 nucleotide, right? And all those nucleotides join together and form a polynucleotide chain, whether it is RNA or it is DNA, right? So children, this is about the structure, and in the next video we will discuss about the polynucleotide formation. Till then, have a nice day and thank you.